PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। बरतानिया में एक तारीख़ी रेफरेंडम मुनक़िद हुआ है। ये तारीख़ी इसलिए है कि एक तो ये दुनिया के एक अहम मुल्क में हुआ है, बरतानिया में हुआ है, और इसका ताल्लुक़ है सिख हुकूक़ से और सिख कौम की राइट से जो इंडिया में है, तो एक दूसरा मुल्क हो गया। और फिर ये इतना बड़ा इस पैमाने पे वोटिंग होना, ये एक तारीख़ी चीज़ है। ये कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पे अगर प्रोड्यूसर साहब साथ दिखाएं आप, तो ये पिक्चर्स जो हैं ये मेजर रेफरेंडम है। मेजर इसलिए भी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की बरतानिया के साथ थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, जिस पे अभी हम बात करेंगे, और मेरे साथ एक नामवर सहाफ़ी लंदन से हैं जो इस पे थोड़ा सा तफसील बताएंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश की और इंगेज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, फॉरेन ऑफिस को, ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को कि ये ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये हो गया। तो इट्स अ बिग थिंग। और साथ ही ये हमारे कॉलीग हैं नामवर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह, लंदन में वेरी वेल नोन मुर्तज़ा हमारे कॉलीग हैं, और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये फुटेज जो है, मेरे ख्याल में ये बहुत कम चली हैं पाकिस्तानी मीडिया पे, एक दो जगह पे ही चली हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ये फुटेज मुर्तज़ा अली शाह का है लंदन से, जब वोटिंग हो रही थी। आप यहाँ पे जज्बा देखें और देखें कितने बड़े पैमाने पे हुआ है। प्रोड्यूसर साहब दिखाएं। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाए हैं ये क्लिप्स। ये मुर्तज़ा अली शाह के हैं, ये उनकी फुटेज है, और मुर्तज़ा हमारे साथ ही हैं, अभी उनसे बात भी करते हैं इसके ऊपर। तो ये आपने देखा कि किस बड़े पैमाने पे हुआ है, यानी ह्यूज मेजर सेंटर्स, वोटिंग बाकायदा उन्होंने बूथ्स बनाए हुए हैं, और पूरी कैंपेन है, यानी इट्स अ वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, इसकी जो एक क्विक हिस्ट्री जो है, खुलासा जो है, वो एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे भी बहुत चली है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है, सीक्स फॉर जस्टिस, और उसके ये तर्जुमान हैं, और इन्होंने अपनी ज़ुबान में 1 मिनट के अंदर अंदर एक्सप्लेन किया, बल्कि फाउंडर हैं ये फाउंडर हैं सीक्स फॉर जस्टिस के, और इन्होंने एक्सप्लेन किया है अंडर 1 मिनट कि ये कैंपेन क्यों है, ये रेफरेंडम क्यों है, और ये कैसे इसको एग्जीक्यूट किया है। ये क्लिप देखें। क्यों करा रहा सिख कौम रेफरेंडम क्यों करा रही है? कारण कि जो भारती हुकूमत है 1950 तो पहला सिख कौम ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਣਾ, 1984 'ਚ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਨ ਉਸ ਦਿਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲੀ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦਿਸ ਕਾਜ਼ ਗਲੋਬਲੀ to pressure the international and the western world, so they should go to India and they should go after India and tell them this is a democratic right to vote is a fundamental right, कि वोट पाना हक है और फंडामेंटल राइट है, और उस सिख कौम ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ जाए। अच्छा, ये तो फाउंडर थे सीक्स फॉर जस्टिस के, और साथ में आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। यंग वुमेन एक्टिविस्ट्स, ऑर्डिनरी पीपल जो आए हैं वोट करने के लिए इस रेफरेंडम में। मैं सिर्फ ये अगला जो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक ब्रिटिश सिख ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो है। स्मॉल शॉर्ट इंटरव्यूज़ हैं उन लोगों से जिन्होंने आके वोट दिया है। सिर्फ आप ये नोट करिएगा इस क्लिप के अंदर कि कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड और कितना जज्बा जो है,
اور کس طریقے سے اور کیا یہ سب کہہ رہے ہیں. یہ ذرا کلپ انٹرویوز کا دکھائیں پروڈیوسر. We are losing everything that we have had, everything that has come over the years. People want real change for Punjab. I voted in the Khalistan referendum because I think we have a chance to be governed fairly. We deserve our own state. We deserve to be recognised as an independent community. The Punjab state existed before the state of India, and it seems that the Punjab people, the Sikh people in Punjab state, should be their own independent state now. We need Khalistan, and it will happen. One day it will happen, and this is just the start. ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੀ ਆ. Khalistan is our right. Khalistan Zindabad. Khalistan Zindabad. میرے ساتھ اس وقت لندن سے جوائن کر رہے ہیں پرمجیت پما سنگھ جو کہ سپوکس پرسن ہے خالستان موومنٹ کے, اور یہ لندن سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. ساتھ ہی میرے ساتھ مرتضیٰ علی شاہ ہیں, ہمارے کولیگ ہیں. اور مرتضیٰ آپ کا بہت شکریہ, آپ سے میں نے بھی تھوڑی سی بات کر لی ہے جو ڈپلومیسی اور جو کوششیں ہوئی ہیں اور کیسے یہ فائنلی جو ہے یہ کیمپین اور یہ ووٹنگ جو ہے ہوئی ہے ریفرینڈم. اور اس کے بعد میں جب آپ دونوں سے بات ہو جائے گی تو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں دو ایکسپرٹس ہیں جو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں یہ سکھ سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ ہے, سکھ رائٹس کا جو ایشو ہے انڈیا میں, اور انڈین گورنمنٹ کی جو ریاکشنز ہیں. اور ساتھ میرے یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس شانزہ گوندل جو کہ اسکالر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی انڈیا پہ اور سکھ موومنٹ پہ ان کی ریسرچ ہے. شانزہ آپ کا بہت شکریہ, این ڈی یو سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کا بہت شکریہ. اور ساتھ ہی عبداللہ شاد ہیں, آپ جو ہیں نوائے وقت میں لکھتے ہیں اور ساتھ ہی آپ گرومکھی لینگویج پہ ایکسپرٹ ہیں جی, اور عموماً جو ہے سکھ افیئرز اور ایشوز پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. تو عبداللہ اور شانزہ آپ دونوں سے جو ہے ابھی بات ہم کرتے ہیں اس پہ تفصیل سے, لیکن پہلے میں مرتضیٰ آپ کی طرف آؤں گا, لیکن شروع بس میں کرنا چاہ رہا ہوں پرمجیت سنگھ صاحب سے. تو تھینک یو ویری مچ پرمجیت صاحب جی, آپ نے جو ہے وقت نکالا اور آپ کو کنگریچولیشنز ٹو یو for organizing such an impressive campaign. I was looking at the pictures, the videos, it's really amazing. And if you could just begin by just telling us, how did you finally pull this off? یہ کیسے آپ نے کر دیا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے, میں بھی فالو کر رہا تھا, بڑی اس پہ کانٹروورسی ہوئی تھی انگلینڈ میں, اور یو کے گورنمنٹ بھی جو ہے اس پہ انوالو ہو گئی تھی, اور چانسز یہی تھے کہ اٹ ول بی امپاسبل ٹو ایگزیکیوٹ دس ریفرینڈم, بٹ یو فائنلی ڈڈ اٹ. ہاؤ ڈڈ یو پل اٹ آف؟ جی پہلے ਤਾਂ PTV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ. ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹਾਈਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ. ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ. ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ क्वीन एलिजाबेथ स्क्वायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ इवेंट करवाया जी। बड़ी बात है। और बल्कि प्रोड्यूसर साहब अभी परमजीत साहब ने जो जिस बिल्डिंग का जिक्र किया है, ये जो क्वीन एलिजाबेथ बिल्डिंग है जो सेंटर है, ये इसकी पिक्चर्स भी हमारे पास हैं, बीच में अगर आप दिखा सकें तो वो भी दिखा दीजिएगा। आई हैव मोर क्वेश्चंस परमजीत साहब, लेकिन इससे पहले बिफोर आई आस्क यू, मैं मुर्तज़ा अली शाह को, हमारे कोलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वेरी वेल नोन इन पाकिस्तान, ऑल्सो इन लंदन, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं। मुर्तज़ा, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो डिप्लोमेसी हुई है बिहाइंड द सीन्स, इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, फॉर मंथ्स, और ये महीनों से हम सुनते आ रहे हैं कि बड़ी कोशिश हो रही है, बड़ा इन्फ्लुएंस, बड़ी लॉबिंग, सो दैट दिस रेफरेंडम डज नॉट टेक प्लेस। हाउ डिड इट हैपन फाइनली? आनंद भाई, मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो रेफरेंडम और जो मूवमेंट है इटसेल्फ, इसके हवाले से जो इंडिया की जो एफर्ट्स है वो मुख्तलिफ टीयर्स पे जारी रही। अभी जो परमजीत सिंह साहब आपसे बात कर रहे हैं, सिर्फ इनके ऊपर इंडिया ने बरतानिया में बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस रन करवाया। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को उन्होंने, बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर ने लॉबिंग की कि इनको इंडिया के हवाले किया जाए, और फिर इनका केस कोलैप्स हुआ आज से चंद महीने पहले। इन्होंने शायद खुद ये नहीं बताते, बहुत बड़ा एक्सट्रेडिशन का केस था जिसमें इंडिया कह रहा था कि परमजीत पमा को हमारे हवाले किया जाए, ये दहशत गर्द है। वो कोर्ट्स ने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये एक पीसफुल एक्टिविस्ट है, क्योंकि इनका जो लिंक है वो खालिस्तान रेफरेंडम और खालिस्तान मूवमेंट से था। उसके अलावा जब ये ऐलान हुआ था आज से जो चंद महीने पहले, अभी तो पैंडेमिक से पहले, कि लंदन में जो खालिस्तान रेफरेंडम होगा, उसके बाद तो पैंडेमिक हो गया, लॉकडाउन हो गया, लेकिन उस पूरे अरसे के दौरान जो इंडियन हुकूमत थी उसकी लॉबिंग चलती रही, और उनकी एफर्ट ये थी कि जो रेफरेंडम वो दो उनकी कोशिशें थी। एक तो ये कि ये हो ही ना, और दूसरा अगर होता भी है तो इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन हो, और उनने मुख्तलिफ जो सिख कम्युनिटी के अंदर और जो इंडियन कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारी इंडियन हाई कमीशन के जरिए एफर्ट्स हुई। लेकिन जो उस दिन, जिस दिन जो आज से 3 दिन पहले जो 31 को जो लोग निकले हैं, अनबिलीवेबल था इवन फॉर ऑर्गेनाइजर्स, और जो बाकी जो मीडिया और आम लोग के अंदाजा था कि शायद चंद हजार लोग आएंगे, 4-5 हजार लोग आएंगे, लेकिन वहां पर सुबह 9 o'clock से लेकर शाम 6 बजे तक पूरे बरतानिया से जो क्यूज लगी हैं, खासतौर पे हम वो लोग जो इवेंट्स को कवर करते हैं, जिन्होंने चाहे वो कश्मीर की मूवमेंट हो, खालिस्तान की, दीगर मुख्तलिफ जमहूरियत के लिए तय किए हों, जो कवर किए, और हमारा काम ही यही है। यकीन कीजिए इस तरह का टर्न आउट और इस तरह का एक पैशनेट क्राउड जो सिर्फ और सिर्फ एक कॉज के लिए आए, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने लास्ट टाइम इतना बड़ा और वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, और ये नहीं कि ये कोई किसी ने ऑर्गेनाइज किया था, जो लोग आए हुए थे वो एक कॉज के लिए आए हुए थे, और वो उन्होंने बड़े पैशनेटली इसमें हिस्सा लिया। और ये पूरा सारा कुछ जो हुआ, ये इंडियन हुकूमत की जो फुल टाइम जो उनकी एफर्ट्स थी ओवर सेवरल ईयर्स, उसके बावजूद ये सारा कुछ हुआ। तो इस रेफरेंडम की सिग्निफिकेंस ये है कि ये पहली बार, देखिए यहाँ पर जब भी, यहाँ पर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के हवाले से हर साल यहाँ पर मेमोरियल होता है, हजारों सिख आते हैं और वो उसमें मजम्मत करते हैं, वो सब खालिस्तान के सपोर्टर्स भी होते हैं। लेकिन इस तरह के इवेंट की जिसमें बाकायदा तौर पर एक रेफरेंडम में हिस्सा लेना और अपनी जो एक विल उसको एक्सप्रेस करना, ये इस तरह का इवेंट इससे पहले नहीं हुआ है। अच्छा मुर्तज़ा, आप बात कर रहे हैं, और आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। आपने बड़ी ज़बरदस्त फुटेज जो है वो आपके YouTube चैनल पे थी, हमने कर्टसी आपके YouTube चैनल के आप ही की फुटेज हम आपके नाम के साथ आपको क्रेडिट देते हुए हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं मुर्तज़ा कि वहाँ पे इंग्लैंड में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, पब्लिक लाइफ में पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उसमें इस पर बड़ी डिबेट हुई थी वेदर इट शुड बी अलाउड, इसको करना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन दे या ना दे। तो इवेंचुअली फाइनल डिसीजन ये हुआ कि देना चाहिए परमिशन। ये थोड़ा सा इस डिबेट का बताएंगे कि ये डिबेट जो हुई थी कैसे हुई थी और कौन खिलाफ, फेवर में कौन थे, हु वर अगेंस्ट इट? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा जो बरतानवी हुकूमत के लिए भी या किसी के लिए भी मसला हो सकता है कि लोग जो फॉर एग्जाम्पल जो ग्रुप ये ऑर्गेनाइज करा रहा था, लीड करा था, सिक्स फॉर जस्टिस, जो गुरपंत सिंह पन्नू है, परमजीत पमा और इनके दूसरे कलीग हैं, ये सारे लोग तो मतलब ये बिल्कुल पीसफुल एक्टिविस्ट है। यहाँ पर ना किसी के ऊपर कोई केस है, ना किसी ने कुछ इलीगैलिटी की है, ना क्रिमिनलिटी की है, ना ही जो बात
जो कह रहे हैं वो इलीगल है। लिहाजा ये पूरी जो बरतानवी हुकूमत को, जो इंडियन हुकूमत की तरफ से लॉबिंग हुई भी कि ये हमारे इंटीग्रेशन के खिलाफ काम हो रहा है, और मुख्तलिफ जो एलिगेशन के ये जो है ना वो रेबल्स हैं, ये एक्सेट्रा जो एलिगेशन है, वो बरतानिया के कानून में उनकी वैल्यू नहीं है। इसलिए कि जो बरतानवी हुकूमत है, जो इंस्टीट्यूशन, उनको पता है कि ये लोग बेसिकली एक पीसफुली अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, ना ये उन्होंने गन उठाई है, ना इस तरह की कोई बात है, तो ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन आप इसका अंदाजा ये कर दें कि इस इशू ने कितना बड़ा इंडिया के लिए एक हेडेक कॉज किया कि जो ग्लासगो में जो क्लाइमेट समिट हो रही थी, उस पे जो नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन की जो दोनों वज़ीर आज़म की जो बातचीत हुई, उसमें जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो खुद वो कहते हैं, इंडियन मीडिया को उन्होंने बताया कि हाँ, उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान रेफरेंडम और जो उन्होंने कहा कि जो ट्रबल मेकर जो सिख एक्टिविस्ट हैं उनके हवाले से बात की। मुख्तसर उस मुलाकात में उन्होंने इशू रेज किया कि भाई हमने उनसे आप पे बात करनी है। इस पर जो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी उनका ये दावा है कि बोरिस जॉनसन ने कहा कि ठीक है, अब आप समझते हैं कि ये आपके लिए मसला है। अब दोनों ममालिक के, इंडिया और बरतानिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो मिलने जा रहे हैं आज से तकरीबन 2 हफ्ते के बाद, जिसमें एक्चुअली वो खालिस्तान रेफरेंडम और जो सिख एक्टिविज्म है उसके हवाले से वो बातचीत करें। अच्छा मुर्तज़ा, ठीक है मुर्तज़ा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो वेरी क्विकली, वो ये है कि इस पे पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप्स है डिप्लोमेटिक यूके और इंडिया, इस पे कोई इम्पैक्ट हो सकता है इस रेफरेंडम का? इम्पैक्ट देखें, बड़े अरसे से जो इंडिया जो डिप्लोमेटिक जो 2 फॉरेन ऑफिस हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न जो है ना वो जो खालिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं वो है, और उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ जो यहाँ खालिस्तान की जो सपोर्टर्स है जो कई हजारों में, वो रेजिलियंट है और वो कंसिस्टेंट है। उनकी एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वो जिसके लिए काम कर रहे हैं, और ये इंडिया वो समझता है कि इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये सारे वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वेल ऑफ। ये जो सिख कम्युनिटी को अगर आप देखें बरतानिया में जो, और ये वेस्ट में है, ये बाकी कम्युनिटीज के मुकाबले में बिजनेस में ये बहुत अच्छे हैं। ये इनके जो मुख्तलिफ जो, अगर आप पैसों के हवाले से देखें तो ये वेल ऑफ कम्युनिटी कंसिडर होती है। तो उस हवाले से जो पिछले अर्से में आपको एक और बता दूं कि जो फार्मर्स के हवाले से प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो जहाँ सिख कम्युनिटी ने एक प्रोटेस्ट किया, आप यकीन कीजिए सेंट्रल लंदन में जो गाड़ियाँ जो सिख लेके आए, वो सेंट्रल लंदन में वो गाड़ियाँ कभी नहीं दिखी हुई थी। लोग हैरान से गोरे फोटो बना रहे थे कि ये अमीर लोग हैं कौन, ये जो गाड़ियाँ लेके आए हुए। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि एक जो एफ्लुएंट अपवर्ड मूविंग कम्युनिटी है वो इतनी चार्ज है एक कॉज के लिए, और वो कॉज वो क्या है, खालिस्तान है। ये इंडिया के लिए कंसिस्टेंट जो इरिटेंट है, और इंडिया की किसी भी लेवल पर वो जब बात होती है तो वो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उसका वो प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन मसला ये है इंडियन हुकूमत के लिए कि ये सारा कुछ जो 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 एक डेमोक्रेटिक टेरेन है, ये उसके अंदर हो रहा है, उस बाउंड्री से बाहर ये कुछ हो नहीं रहा है। ये सारे लोग जो अपने ये बड़ा मसला हो गया इंडियन गवर्नमेंट के लिए। मुर्तज़ा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ थे, और बहुत सारी फुटेज जो आप यहाँ प्रोग्राम में देखेंगे आगे चल के भी, वो मुर्तज़ा अली शाह की खुद उन्होंने फिल्म की हुई है। परमजीत साहब, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। आपसे एक तो पहले मैंने ये पूछना है कि ये जब आपकी तैयारी हो रही थी अभी इस रेफरेंडम के लिए, तो बीच में आपसे डेफिनेटली आप परमिशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आप यू वर इन टच, परमिशन, ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के लिए, बट एट द सेम टाइम डिड ऑल्सो द इंडियन गवर्नमेंट या उनकी एम्बेसी, हाई कमीशन इन लंदन, डिड दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन to maybe stop you from doing this referendum, stop you from moving forward? Was there a direct also contact? जी हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया की हुकूमत ने, इंडियन दी एम्बेसी ने बहुत जोर लाया कि रेफरेंडम जिहड़ा है नहीं होना चाहिए। साडे जिहड़े गुरुद्वारा साहिबान ने या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, उन्हां दे तक भी अप्रोच की गई, ईवन के काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड भी किया गया। पर एक गल मैं तुहानूं इहदे च दस दिना हुंदा है कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई गुरुद्वारा जिहड़ा आ ओह सपोर्ट कर सकदा है, कोई नहीं कर सकदा। बहुत लोग जिहड़े पंजाबी हैगे ने जिहड़े हले भी इंडिया दे विच जांदे ने, ते ओह जे ओह उत्थे जाणगे इंडिया दे विच, जे ओह साडी सपोर्ट करनगे, जदों उत्थे जाणगे तां उत्थे उन्हां नूं प्रॉब्लम होएगी। दैट इज़ वट दे थिंक, ऐदा उन्हां दी सोचण शक्ति ऐदा है। पर एक डर जिहड़ा आ ओह पाउण दी कोशिश की गई आम लोकां दे उत्ते,
ਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਬਾਏ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ VOTING ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं कि ਅਸੀਂ दहशतगर्द मुल्क के नाम नहीं रहना चाहते। अच्छा सरब जी साहब, एक सवाल है यहाँ पे जो अब्दुल्ला शाद साहब पूछना चाह रहे हैं, आप गुरुमुखी में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सरदार साहब, बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ RSS ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ RSS ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਨੇ एक ज़ेली तंजीम अपनी बना रखी है राष्ट्रीय सिख संगत के नाम। वो कहती है, और मोहन भागवत भी पिछले दिनों इंडिया के अंदर एक रैली से खिताब करते कह चुके हैं कि सिखिज़म दरअसल हिंदुइज़म का एक हिस्सा है और सिखों के अंदर भी साजिश का इदराक हो रहा है। तो तुसी इनू किवें समझदे हो ते इहदे उत्ते तुसी की कहोगे कि सिखां दे अंदर इस साजिश दा, इस षड्यंत्र दा कितना इदराक हो गया? बहुत जरूरी सवाल। देखो भाजी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 100% ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ RSS ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 25B ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ UK ਹੈ, UK 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
1000 अच्छा चले कोई नहीं, वो सिग्नल कहीं फ्रीज हुआ है, इसको आप प्रोड्यूसर साहब चेक करें। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा अब्दुल्ला, ठीक हो गया? सरजीत साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी हाँ जी आ रही है। बेहतरीन, आपकी बात वो कंप्लीट पॉइंट जो है वो कन्वे हो गया, और बहुत ये अहम क्वेश्चन था अब्दुल्ला आपने जो पूछा है। सरजीत साहब मेरे साथ यहाँ पे हमारी कोलीग हैं शानजा गोंदल, और वो स्कॉलर हैं, और वो भी क्वेश्चन आपसे एक सवाल करना चाह रही हैं। मेरा क्वेश्चन इससे ये है कि एक इस वक्त डायलेमा सा बना हुआ है कि आगे जाके क्या पता ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਨਾ ਔਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਨਕਨਾਈ ਕੋਈ ਐਂਬੀਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ 100% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਕੂਪਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1984 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲੇਮ ਨੂੰ लेके जाना है, वो क्लेम जितना है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। जी और परमजीत साहब, ये आपने एक्सरसाइज की है अभी, ये रेफरेंडम जो किया है लंदन में, यूके में, ये एक पीसफुल डेमोक्रेटिक आपने एक मिसाल जो है वो दुनिया के सामने रख दी है, और ये जो है साबित आपने कर दिया है इस बात को, जो प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ जो है इतने से। और मैं एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आपके पास कोई अब्दुल्ला सवाल कुछ कहना चाह रहे हैं? पूछ लें अगर आप एक और बात है जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो इंडियन हुक्मरान ने जड़े उनके अंदर है कि सिखों को खुश करने के लिए या उनका ध्यान बटाने के लिए वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। 1965 की जब पाक भारत जंग हुई तो जो इंडियन एयर फोर्स के मार्शल थे अर्जुन सिंह, उन्हें 2002 के अंदर फील्ड मार्शल के इक्वलेंट
एयर मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का खिताब दिया गया। यानी 37 साल बाद ऐसी कौन सी खिदमात थी कि एक सिख एयर फोर्स के जो हेड थे मार्शल थे, उन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का खिताब दे दिया गया। और इसके ऊपर मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे इस अब्दुल्ला काम करते हैं जी, मैं एक ब्रेक लेता हूं। परमजीत साहब सॉरी, आपने मेरे साथ रहना है और हम एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। अब्दुल्ला यही सवाल आपने पूछना है और इस पे इसका जवाब भी लेते हैं, फिर आपसे और शाहनज़र से हम तफसीली भी बात करेंगे। और आखिरी जो एक दो सवाल हैं परमजीत साहब जी के साथ जो हम करने हैं वो भी हम कर लेते हैं। छोटा सा वक्फा है, आपने मेरे साथ रहना, क्योंकि अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमने भी करनी है स्टूडियो के अंदर। मुख्तसर वक्त है, उसमें आप हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद मुलाकात होती है। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान, कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। फिर ना कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रियासत। हम लाइव हैं पीटीवी न्यूज़ के स्टूडियो से इस्लामाबाद में। तारीख़ी रेफरेंडम खालिस्तान पर बरतानिया में हुआ है। बरतानिया और इंडिया के दरमियान डिप्लोमेटिकली बड़ी कोशिशें की गई हैं इसको रोकने की, रेफरेंडम की। इसका कामयाबी से हो जाना, ऑर्गेनाइज्ड विद परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक बहुत बड़ी कामयाबी है उन तमाम ब्रिटिश सिखों के लिए और दुनिया भर में जो सिख हैं, जो सिख हकूक़ के हवाले से इतने सालों से जद्दोजहद कर रहे थे। और मेरे साथ दो एक्सपर्ट स्टूडियो में हैं और अभी उनसे बड़ी तफसील से बात करने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से परमजीत पमा सिंह साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है खालिस्तान मूवमेंट लंदन की। इनका बड़ा इनका मेजर, एक्चुअली बड़ा नहीं, मेजर इनका किरदार है, रोल है ये जो सक्सेसफुल रेफरेंडम हुआ है। परमजीत साहब, अब्दुल्ला शाद आपसे एक सवाल पूछ रहे थे। गुरुमुखी में आप शुरू। सरदार जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1965 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਤਕਰੀਬ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ ਦਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮੁਖਾਲਫ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ सरकारी सरपरस्ती के अंदर जो ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स हैं, उनको फैलाया जाता है यंगस्टर्स के अंदर। उनकी क्या जानता है कि जड़ी युवा ने उत्थे दे वो सारे इन्हां च गर्क हो चुके हैं नशे के अंदर। और ये सारा एक षड्यंत्र दे करके किया जा रहा है ताकि जो सिखों का मुस्तकबिल है और उनकी विल पावर है उन्हें ख़त्म किया जा सके। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं एक तुहानू गल बहुत ज़रूरी है जिहड़ी दसनी है, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਖੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੁਕੜ ਬੋਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਆ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। बिल्कुल, और आपका, और परमजीत साहब ये आपका मैसेज बहुत क्लियर है, और मैं ये जो जज्बात आपने जो इजहार किया है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए, ये ज़ाहिर हमारे लोग हम सुन भी रहे हैं, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ उसके लिए। और आखिर में जी जरूर कहना चाहूँगा कि जे सिख ते पाकिस्तान इकट्ठे हो जान, दुनिया की सब तो बड़ी ताकत होवांगे असीं, इंशाअल्लाह दुनिया की सब तो बड़ी ताकत होवांगे। हिंदुस्तान पंजाब ते पंजाबियों के सिरां ते राज कर रहा। अज 2 करोड़ पंजाबी जिहड़े आ 40 करोड़ हिंदुस्तान नूं रोटी खवांदा, 40 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों नूं रोटी खवांदे आ। जे पंजाबी ना होणगे हिंदुस्तान दे कोल, जे पंजाब नहीं होएगा हिंदुस्तान दे कोल, उहदे कोल पानी नहीं होएगा, उहदे कोल बहुत सारे रिसोर्सिस जिहड़े आ पंजाब दे ਉਹ यूज करदा आ, ਉਹ नहीं होणगे। बिल्कुल, तो ਅਸੀਂ पाकिस्तान ਨੂੰ ਇਹ अपील करते हैं कि वो साडी मदद करे। बिल्कुल। अच्छा, मैं बस वक्त हमारा बहुत कम है, एक मुख्तसर जवाब चाहिए परमजीत साहब, और वो ये है कि नेक्स्ट स्टेप, ये रेफरेंडम हो गया है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है इसके बाद? देखो, रेफरेंडम का हले सिर्फ आगाज होया। एक दिन सी 31 अक्तूबर का, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਬਿਹਤਰੀਨ। ਹਰੇਕ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ टिक कीता ते किन्नियां ने नो दे विच टिक कीता। बिल्कुल परमजीत साहब, बिल्कुल, और हमने आपको फॉलो भी करना है। और अभी तो जैसे बरतानिया में, यूके में सिख, ब्रिटिश सिख, इसी तरह कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में, तो ये बड़ी एक्टिविज़म है, बहुत बड़ी कामयाबी है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, आपने इतनी ज़बरदस्त मुनज़्ज़म कैंपेन, आपने तो एक मिसाल क्रिएट कर दी तंजीम में और ऑर्गेनाइजेशन में, और पीसफुल कैंपेन चलाने में आपने ये बहुत बड़ा काम किया है। मेरा वक्त बिल्कुल कम है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, और आपसे मैंने राब्ते में, हम आपके साथ रहेंगे इस प्रोग्राम में भी, और आपसे आगे भी चल के बात करनी है। परमजीत पमा सिंह थे मेरे साथ लंदन से, स्पोक्स पर्सन खालिस्तान मूवमेंट लंदन।
لندن. اور پروڈیوسر صاحب آپ یہ جو ریفرینڈم ہوا یہ دکھاتے رہیں. پرمجیت صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں ذرا اسٹوڈیو میں اب آنا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ جو مہمان ہیں شانزہ اور عبداللہ, آپ دونوں اسکالرز ہیں اور آپ دونوں جو ہیں یعنی سکھ موومنٹ پہ آپ اسٹڈی بھی کرتے رہے ہیں, اور یہ جو امیجز ہیں آپ نے ساری ڈسکشن دیکھی. تو میں عبداللہ شنزہ آپ سے پہلے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ویری کوئکلی, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ ویری کوئکلی بس ایک سوال کا جواب دیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سکھ قوم کی جو ایسپریشن ان کی خواہش ہے کہ ان کی سیلف ڈٹرمنیشن, وہ خود اپنا فیوچر کا تعین خود کریں بھارت کے اندر, تو یہ جو چیز ہے یہ کتنی اسٹرانگ ہے, اور یہ جو ہم نے لندن میں ہوتے دیکھا ہے اس کے امپیکٹ ان سائڈ کتنا ہے؟ ایک کوئک اگر آپ بریف ایک اوور ویو دے دیں. بیسکلی یہ جو ابھی 1984 کے بعد خالصتان موومنٹ ایک بہت زیادہ آئی ہے نا, اس میں یہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس کو پالیٹکس آف گریونسز کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے 4000 لوگوں کو مار دیا, ریاست نے اپنے 4000 لوگوں کو مار دیا, تو اس کے بعد یہ ایک پالیٹکس آف گریونسز ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پاکستان کے لیے بڑا پیغام ہے کہ ڈائسپورا کتنا ایک اسٹرانگ امپیکٹ رکھتا ہے. اگر ہم انٹرنیشنلی اس کو اسی طرح ڈائسپورا کام کرنا شروع ہو جائے, جیسے ہم کشمیر کے لیے اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں, تو اسی طرح ہم اس کو لے کے چلیں, کیونکہ ایک انڈیا کا یہ بھی کلیم ہے نا کہ یہ جو کچھ کرا رہا ہے یہ ISI کرا رہا ہے, پاکستان کرا رہا ہے, یہ اٹ از سپورٹڈ بائی اینڈ بیکڈ بائی پاکستان. تو اس میں یہ ہے کہ اگر پاکستان نے کرانا تو سب سے پہلے تو ہم اپنا کشمیر کا کراتے, اور اس میں آگے یہ ہے کہ پاکستان پہ یہ بلیم کیوں لگاتے ہیں کہ کیوں کرا رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو کیونکہ سکھ آتے ہیں, بہت زیادہ آتے ہیں, اور ان کے لیے ہم نے کرتارپور کوریڈور کھولا ہے, ان کی ہم ہاسپٹیلٹی کرتے ہیں, ان کا ہمارے ساتھ آنا جانا ہے, ان کی جو ریلیجیس ہسٹوریکل پلیسز ہیں وہ پاکستان میں ہیں, اور اس لیے یہ انڈیا کا ایک ایجنڈا ہے کہ یہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں ان کو ISI والے ٹرین کرتے ہیں اور واپس کر کے بھیجتے ہیں. حالانکہ انڈیا کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ ان کی اپنی جو پالیٹکس آف گریونسز ہے وہ چل رہی ہے اور وہ ان کے لیے آ رہی ہے. تو شنزہ یہ جو ہوئی ہے آرگنائزیشن لندن میں, اب یہ پاکستان میں تو نہیں ہوئی, یہ لندن میں ہوئی ہے, اس میں کوئی ہمارے لوگ یہاں اگر ہم انڈیا کا نیریٹو اگر وہ صحیح ہو کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے, تو یہ جو امیجز ہیں یہ اتنی زبردست, یہ تو ہم بھی اپنے ملک میں نہیں کروا پاتے اس طرح کے ووٹنگ جو ہے اتنی آرگنائز, اتنی زبردست جو ہے. تو یہ تو انڈیجنس یہ ثبوت ہے کہ یہ برٹش وہاں پہ جو کمیونٹیز ہیں سکھی جو انفلوئنشل ہیں, فائنینسنگ ہے, تو یہ کر رہی ہیں, تو یہ ثابت ہو گیا. دیکھیں انڈیا جو میڈیا ہے وہ ایک فالس پروپیگنڈا کریٹ کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہے, اور میں نے تو ایک چینل پہ یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو سکھ جو جسٹس ہے موومنٹ, ان کے جو ہیڈ ہیں یہ لاہور میں بیس کرتے ہیں. ان کے ایک چینل پہ یہ بھی پروپیگنڈا تھا کہ یہ لاہور میں بیسڈ کرتے ہیں, تو وہ تو اسی طرح پروپیگیٹ کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں ایک تو پہلے سب کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان نے کریٹ نہیں کی, یہ ایک ہسٹوریکل ان کی ریلیجن اور پولیٹیکل موومنٹ ہے, اور یہ ہے. اور اس کے بعد ہمیں اس کو تھوڑا ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس پہ زیادہ لکھیں اور بولیں, اور ہم کہیں کہ یہ آپ جو سب کے ساتھ اپنے شہریوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اس وقت 6 موومنٹ سیشنسٹ موومنٹ انڈیا میں چل رہی ہیں, تو ہمیں یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اچھا شاہ صاحب, انفارچونیٹلی وقت کم ہے, لیکن آپ کو بلانے کا اور عبداللہ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ میں چاہ رہا ہوں لوگوں کا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ ہمارے یہاں ینگ آپ جیسے لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کے سکھی موومنٹ یہ سب کچھ, اور یہ ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. وقت بہت شارٹ ہے. عبداللہ کو بھی میں ان کرنا چاہ رہا ہوں. عبداللہ ویری کوئکلی, آپ کی تو ماشاءاللہ یعنی آپ تو اسٹڈی کی ہوئی ہے, آپ نے ریلیجن سکھ مذہب جو ہے پورا دھرم جو ہے آپ نے پورا اسٹڈی کیا ہوا ہے, اور اس کی فل رسپیکٹ بھی ہے. ویری کوئکلی آپ کے ریمارکس اس موومنٹ کے بارے میں. میں اس کے اندر یہ جو بات آپ ابھی کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے بیک کیا جاتا ہے, یہ اصل میں بات یہ کہ 1965 کی جنگ ہو یا 1947 کا جو نقل مکانی تھی, اس کے اندر جو سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے وہ دونوں سائڈ کے پنجاب کا ہوا ہے. جو کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ مارے گئے, کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ لوگ مارے گئے, اس کے اندر سے جو 90% تھے وہ ان دونوں پنجاب سے تعلق رکھتے تھے. تو ان دونوں علاقوں کے عوام نے جنگ کو, قتل و غارت گری کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ اب یہ امن پسندی اور اس طرف جاتے ہیں. اور جب اس طرح کی کلچر کی بات آتی ہے تو انڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اور جو آپ نے بات کی تھی شروع میں کہ جو سکھوں کے اندر یہ احساس ہے کہ ہمیں ہمارے پاس وطن ہونا چاہیے, اس کا یہ کہ جو سکھ ہیں, ایک سکھ فرد ہے, وہ جو ریاست کی تعریف ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے. اس کے پاس ایک بالکل سیپریٹ دھرم ہے, مذہب ہے, اس کا بالکل کلچر ہے, وہ کنسیڈر ٹو بی بریو
हिस्ट्री उसकी अपनी है और वो बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है हिंदुओं से मुसलमानों से। 1 minute and half है अब्दुल्ला, वेरी क्विकली। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये भी इल्ज़ाम था सिखों के ऊपर कि वो वायलेंट है और वो वायलेंस करते हैं। तो ये जो पीसफुल इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है, ये मेरे ख्याल में इस्तेमाल होनी चाहिए एज एन एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल होनी चाहिए। और उसके बाद जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है इंडिया के अंदर, उसे 1 साल तकरीबन इस नवंबर के अंदर पूरा होगा, बल्कि इससे ज़्यादा हो चुका होगा। उसके दौरान औरतें, बूढ़े, बच्चे सड़कों के ऊपर बैठे हैं, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, कोई उन्होंने आगे से रिटेलिएट नहीं किया। और जब इस साल 26 जनवरी को जो हिस्टोरिकल वाक़या पेश आया, जो सिखों ने मार्च किया लाल किले की तरफ और उसके ऊपर अपना लाल किले के ऊपर जहाँ से 15 अगस्त की तकरीब होती है उनकी सरकारी इंडिपेंडेंस डे की, उसके ऊपर उन्होंने अपना खालसा परचम लहरा दिया। उसके बाद इंडिया को एक और मुंह की खानी पड़ी जो अफगानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ उनका तारीख का सबसे बड़ा। और उसके बाद जो अब ये सिख रेफरेंडम हुआ है, तो इस वक्त अब एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि जले पाँव की बिल्ली बने हुए हैं वो। तो इसलिए कभी वो पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, कभी उन्हें आतंकवादी यानी दहशतगर्द करार दिया जाता है, कभी कुछ दूसरा, कभी उन्हें हिंदुओं के अंदर जम करने की कोशिश की जाती है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था उनसे, ये जो जम वाला है और ये जो कि हम भाई हैं। अच्छा आखिर में, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? इसका मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि टाइम नहीं है हमारे पास, वेरी क्विक। 1986 के अंदर आरएसएस ने राष्ट्रीय सिख संगत के नाम से एक तंजीम बनाई थी, जिसका मकसद ये था कि वो सिखों को हिंदुओं का एक फ़िरका साबित करे। और इस पंजाब और हरियाणा इसके अंदर इस इलाके में उसकी 500 से ज़ायद शाखें इस वक्त काम कर रही हैं, इस वक्त कर रही हैं। और ये कांग्रेस की तरफ से भी बैक था, आरएसएस की दुश्मन होने के बावजूद इस पेज पे दोनों वो साथ हैं और ये उनकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा। अच्छा वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म है और अब्दुल्ला आपको बुलाने का और शंजा आपको बुलाने का, क्योंकि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं आप, पंजाब, इंडियन पंजाब और ख़ास तौर पे सिख अफेयर्स। मैं उम्मीद है कि आपको हम और भी चैनल्स पे देखें और उस पर आएँ और हम आपको, दिस इज़ नॉट द लास्ट, आपने फिर आना है, हमने इस पर अभी मज़ीद डिस्कस करना है क्योंकि ये बड़ा तारीख़ी इवेंट हुआ है, इस पर थोड़े से तज्ज़िये की ज़रूरत है जो अनफॉर्चुनेटली आज के प्रोग्राम में हम कर नहीं सके अभी। और आपने इसलिए मेरे साथ फिर ज्वाइन करना है नेक्स्ट वीक, हम इस पर थोड़ा सा तफसील करेंगे कि जो रेफरेंडम हुआ है इसको एनालाइज करेंगे। मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म है, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।